नमस्कार। ब्रज विजन के नए एपिसोड में आज हम संवाद करेंगे श्री हरविजय भाइया जी से, जो एक आइकन है आगरा के लिए, जो उनका दिल आगरा के लिए धड़कता है। वो एक क्रिकेटर भी रहे हैं, एक रैलीस्ट हैं और बहुत सारे चीज करते हैं, और उनको खिताब आगरा में ग्रीन मैन का भी मिला हुआ है। नमस्कार भाइया साहब। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि आप आगरा के लिए आपका दिल धड़कता है, तो ये एवोल्यूशन कैसे हुआ? आई थिंक ये तो बड़ी सिंपल सा आपने सवाल किया है। मैं यहाँ पर आगरा में 1957 में आया था, तब से मैं आगरा में मैं तो आगरा वासी हूँ और आगरा मेरा घर है, और अगर अपने घर को प्यार भी करेंगे तो किसको करेंगे। नहीं, पर आप जैसी सोच बहुत से लोग आगरा में नहीं रखते, इसलिए मैंने ये सवाल किया। इस बात पे तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु सोच तो आई थिंक सभी कुछ करते हैं, पर कुदरत भी है कि किसी को अपॉर्चुनिटी दे देती है, काबिल बना देती है। और भगवान ने यदि मुझे थोड़ी बहुत काबिलियत दी है तो आई मस्ट ऑनर दैट एंड आई मस्ट बी ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं कुछ सेवा कर सकूँ, तो आई जस्ट डू दैट। आपकी स्कूलिंग और कॉलेज आगरा में हुआ है? जी, बचपन में जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो तो मेरी आसनसोल में हुई थी। उसके बाद जो प्राइमरी के बाद जो एजुकेशन होती है अप टू द 8th स्टैंडर्ड, वो मेरी मिलिट्री स्कूल में हुई थी। उसके बाद फिर हम आगरा में आ गए, तो 1 साल में सेंट पीटर्स में रहा। फिर मैंने हाई स्कूल अपनी MD इंटर कॉलेज से करी, फिर इंटरमीडिएट मैंने RBS इंटर कॉलेज से करी। Then I joined RBS Degree College, but incidentally, because of my cricket, I was picked up and taken to St. John's College. So I did my graduation from St. John's College. I could not complete my masters in English for some. आपकी बहुत मेमोरीज है सेंट जॉन्स कॉलेज की जी। कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं। सभी मीठी हैं, खट्टी कुछ भी नहीं। I do not know आपका डेफिनेशन खट्टी का क्या है। उसकी तो मैं तो आपको सच बताऊंगा कि सेंट जॉन्स कॉलेज नहीं, मुझे जो कुछ मैं आज हूँ, थैंकफुल टू सेंट जॉन्स कॉलेज। मैं शायद गुरुद्वारे के सामने से निकलता हूँ या गिरजा के सामने से निकलता हूँ या मस्जिद या कोई बाजार के सामने से, तो शायद मैं सिर अपना झुकाना भूल जाता हूँ, पर जब मैं सेंट जॉन्स कॉलेज के सामने से निकलता हूँ तो मेरा सिर झुक जाता है। आपने वहाँ क्रिकेट बहुत खेली, आपने यूनिवर्सिटी भी रिप्रेजेंट किया, और आपके टाइम में यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल में आगरा यूनिवर्सिटी की पोजीशन जी अब तो बरेली तक होती थी। नैनीताल भी आगरा यूनिवर्सिटी का अंदर आता था, तो बहुत क्रिकेट खेली है मैंने। अपने मुँह से कुछ कहना नहीं चाहिए, पर जो क्रिकेट आज आप T20 में देखते हैं वो मैं 1970s में खेलता था, 1970-71 में, और मेरे ऊपर एक ठप्पा लग गया था, एक मोहर लग गई थी कि आप हिटर हैं, आप अच्छे क्रिकेटर नहीं हैं, बिकॉज यू आर अ हिटर। एंड ड्यूरिंग दोज डेज वो जो होती है, जो क्रिकेट बुक स्टाइल से जो वास्कर साहब खेलते हैं, तो वो तो हम खेलते नहीं थे, हम तो पहली बॉल पे छक्का मारने वाले हैं। दैट्स ऑल आई यूज्ड टू डू। पर आप क्रिकेट खेलते खेलते कार रैलिंग, हिमालयन कार रैली, ये इट्स अ लॉन्ग जर्नी, because incidentally when I was in St. John's College, I was also the captain of the St. John's College football team. जी। And आप हॉकी भी खेलते? हॉकी भी खेलता था कॉलेज के लिए, परंतु मैं फुटबॉल काफ़ी अच्छी खेलने लग गया था। तो हमारा इंटरवर्सिटी मैच था अलीगढ़ में। जी। तो अलीगढ़ में अलीगढ़ के कॉलेज से मैच था, वहाँ मेरा घुटने में बहुत सीरियस इंजरी हो गई थी, and I was carried back to Agra. So I lost my knee. And because of having lost my knee in 1971, my sports career was, disturbed and came to an end. So there was nothing that I could do physically so strongly, which I was capable of doing. So कुछ नहीं हुआ। फिर 1975 में when I was in Kenya, I was teaching in there. तो वहाँ पर national sport is car rally. So somehow it was a coincidence that I got into car rallying as a part of the East African Safari Service team, and मेरा rallying career 1975 में शुरू हुआ, और कोविड से पहले तक मैं रैली कर रहा था।
मुझे याद है आपके पास I did the Himalayan Rally and I was representing BMW West Germany. ओके सो ये जब कार रैली जब आप करते हैं ये एक स्पोर्ट्स आम आदमी के लिए बड़ा नया सा है हाँ ये आम आदमी के लिए it's not so easy. It is an expensive sport. Besides being dangerous and it needs a lot of experience and you need to be well trained and very mature. ये जो rallies हैं, you will not believe it that all the F1 drivers, the world champions like Schumacher and all this level के जो drivers हैं, उनकी एक ही dream होती है कि हम car rally चलाएं. Because car rally is the most unpredictable race that you can imagine. Because in a F1 race, the route is charted out, and you know it's within limited conditions. But in rallies, we don't know where we are going. You are just given a We are not even told the route. okay. We are given the route right at the start. Okay. So then the navigator has to be a The navigator plays the most major important role in rally. So what was your role? You were a navigator? Or No, I am a driver. You were a driver. I'm an absolute professional driver. And you had a good set of navigators. Yes, I have only one navigator since in India since the time I started rallying, and his name is Rajan Singh. Okay. Even now he navigates for me. He navigates. आपके कुछ बचपन के इंसिडेंट है कि आप स्कूटर पे ही बहुत दूर तक निकल जाया करते थे घूमने के लिए I don't think so you can complete my stories in this short span of time. बहुत ज़्यादा adventures हैं. I have an encyclopedia of कुछ आप बताएं जिससे जो आज का यूथ है he should get motivated. Well, most of my things is not motivated. Adventure हो जाते हैं unpredictably. वैसे planned adventure मैंने कोई ऐसा नहीं किया है. और जब भी मैं निकल गया हूँ तो I have been blind in where I go कि चलो निकल जाओ. अब वहाँ जाते हैं तो blindness में तो आपको you never know what happens. So, बहुत से incidents हुए लाइफ में अफ्रीका में इंडिया में. I've been chased by an elephant. I've been attacked by a rhino, and I have been pushed into a bush by a wild boar. So वाइल्ड लाइफ में मेरा नेचर में घूमते हैं तो ये चीज़ एडवेंचर्स होते रहते हैं. सो स्कूटर पे तो यही है कि इट वाज मोर फॉर कन्वीनियंस एंड आई रियली डोंट थिंक सो आई हैड एनी एडवेंचर टू दैट एक्सटेंट वेयर इट कैन इंस्पायर एनीवन. रैलिंग में तो अनलिमिटेड एडवेंचर्स हुए मेरे साथ. सो इट्स like who has been a biggest influencer in your life? Mahatma Gandhi, Bertrand Russell, and Victor Hugo. And what about your father? He was my father was the man who led me, and you know I saw him, and so whatever I saw him is exactly what I am. I am exactly a copy of my father. जो पिताजी मेरे थे बिल्कुल मेरी तरह थे. और so whatever you see in me, it's you can see it. That's me. That's my father. जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, what was the reason to select shoe industry? Because to be honest, let's be honest about it. My objective was never to do business. My objective was to be a sportsman in India, but I failed in that in 1971. Then I wanted to join the defense because my father was from the army. फौज में थे as a colonel. So obviously मैंने जितनी भी डिफेंस सर्विसेज के लिए ट्राई किया मैं सब जगह रिजेक्ट हो गया. जहाँ मैं गया हूँ वहाँ बिकॉज ऑफ माई नी आई वाज मेडिकली रिजेक्ट. उसके बाद फिर सोचा कि मैं IAS वगैरह में कोशिश करते हैं, परंतु कॉलेज में ही रोमांटिक अफेयर्स में फंस गए और आई हैड टू लीव कॉलेज. नहीं, मैंने सुना है आप उस समय की जो आपकी गर्लफ्रेंड है आज पत्नी है, आप उनको बहुत स्कूटर पे पूरे आगरा में आपने घुमाया. आगरा में ही नहीं, मैं यहाँ से लेके धौलपुर का आप बस क्या कहवा रहे हैं ये कहानियाँ मेरी. परंतु yes, it was a very 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 wonderful time, and you will not believe it that I met my wife at 10:30 in the morning on a particular day on the
8th of September, 8th of October, 1972, and 9th of October 1972 at 7 o'clock in the morning. She was behind me and we were riding all the way to Fatehpur Sikri. Okay. पर उस समय फतेहपुर सीकरी का तो रास्ता जो आज का है उससे तो मेरे को तो डर का नाम मैं जानता है. I have never feared anything, so ये डर ही नहीं था. पर वो मेरे पीछे बैठी हुई थी, मैं उनको फतेहपुर सीकरी तक ले गया. It was very interesting. And वहीं से चलते and 9th of October को हम लोग सुबह फतेहपुर सीकरी गए हैं और 9th of October शाम को 7 बजे I decided to marry. Oh, that's great. Less than 24 hours. Now coming back to your business. Yes, then since I had to leave my studies, I had to sacrifice my family because I got married to my girl of my choice. I was in Delhi working for peanuts, and I was a typist as a typist in a small company, in a big company, but I was just a typist. My first salary was 255 rupees a month. But then somehow I got a breakthrough and I went to Kenya, where I was teaching. But then I had to leave Kenya for the simple reason my daughter was born there, Nancy. So I thought that because in Africa the education, primary education, so I thought I should start thinking of going back to India. And since Agra is the footwear center or Agra is my home, तो मैं बोला यार जूते के धंधे में जाना चाहिए. So इस सोच के संग I gave up my job in Kenya and came back to India and started my shoe business. Once again I was against the wall. But I've been struggling all the time. पर आपने उस समय के टाइम में एक निश प्रोडक्ट बनाया जो क्रिकेटर्स के शूज होते थे. वो मैंने बनाया, बिल्कुल बनाया. I was the first one to create a cricket shoe in India, and thanks to Mr. Sunil, who was a dear friend of mine, and he insisted that Harvijay, मेरा जो cricket shoe है मुझे इंग्लैंड से लाना पड़ता है, तो तू कोशिश कर. So I said why not? So मैंने और सुनील की बात को समझा, and then I created the cricket shoes and I made the cricket shoes, and I'm very fortunate that the Indian team, the West Indies team, the Sri Lanka team, Australian team were all wearing your shoes. Yes, and they visited Agra, my factory. Australian team had also visited my factory. Sri Lankan team has also visited my factory. Indian team that I gave. So you still make those shoes? No, I don't make those shoes anymore. Now you're into which product? I'm into 100% exports. My business was very wide, but then slowly, gradually, I cut it down, and because my bucket list started growing, and the business started going shutter. So I am now in a niche market, and I stay there. And how come doing an export business, traveling all over the world? आप बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं. आपने ताज लिटरेचर फेस्टिवल भी किया, आप पूरे शहर में पेड़ भी लगाते हैं. So हम ये जानना चाहते हैं कि how you find time and how you find. I think we all know about it, but we just don't do it. हम सबको मालूम है, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये नहीं मालूम है कि टाइम बहुत precious चीज़ है. It's more precious than money. It's more precious than everything, and it is time management. It is surely time management. और हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यदि आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो you will अंग्रेजी में भी कहावत है, the early bird catches the worm or whatever it is. तो मैं 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ, and then I compartmentalize my entire day. So it's very easy to do this, whatever I'm doing. It's not difficult at all. Subject to if you are disciplined and if you know exactly what you want to do during the course of the day, and if you are doing multiple things, you are going to fail. If you're focusing on certain things, you do that, then you go on to the next one. You do that, you go on to the next one. You do that. It becomes very simple. It's not difficult. Whatever philanthropy, whatever activity you do, you get support from your family? 100%. So they are there support to... me. Yes. They all know, and they've been very kind to me. They back me up, and they never say anything to me.
but I think I don't do anything wrong. Yeah, that's. But so, नहीं, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि I'm sure if you go to St. John's College, all my professors will tell you yes, that yes. I've never done anything wrong besides Yes. besides being popular. And while they still call you for on special occasions, Yes, that's आपने that kind of thing. आगरा यूनिवर्सिटी की टीम को भी कोच किया है, जी, I created a lot of that. आपने क्रिएट किया, तो it is itself a certification that your popularity and your seriousness, Yes, yes. is discipline is there. So it's really nice. आप क्योंकि ब्रज में रह रहे हैं 1957 से, जी, ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र, जी। आप ब्रज क्षेत्र को क्या इमेजिन करते हैं आगे 20 साल में कैसा डेवलप होना चाहिए? मुझे लगता है कि the movement has started और हमारी जो हिस्ट्री है जो हमको पढ़ाई गई है, in coming times the history will now change and the Indian history जो कि genuine हमारी history है, जो हमारा culture है, and slowly and gradually it will replace our history books and a different history will be taught to our children, and that's going to make a phenomenal amount of difference. I see Mathura really coming up as long as they don't modernize it too much and keep the religious culture in strength. And at the same time, we should not forget that our past culture है, our past history, that also should be sustained. Our heritage should not be touched. Rather, our heritage should be enhanced. Whether it is of any religion, of any caste, doesn't matter, of any era. And whatever has not been done should be highlighted again and brought forward. So if there is something which we have missed in our history, whether it is our Vedas or whatever in other religions, we should bring it forward and enhance that and sustain the existing heritage. I really appreciate that. मेरा एक और आपसे सवाल है, वो ये है कि जो आगे आने वाली यंग जनरेशन है, बिकॉज जो अब देश चलाएगी, जी, so you have seen life not only in India but you've seen internationally. So what message you would like to give it to them? I would only say is that सबसे पहला message that if you want to do anything in life, you have to be disciplined. Okay. Number two, to respect our senior people, particularly your family. And if you don't respect your family, your parents, whatever you may do, believe me, हमारे धर्म में एक something known as karma. Yes. Do not forget it. That will hit you so hard. So आप please अपने कर्मों का ध्यान दें और सबसे पहला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली है. ये मैं हर बच्चे से यही कहूँगा, आप अपनी फैमिली को संभालें, फैमिली की तरफ दें और डिसिप्लिन रहें. You will rise like a phoenix. हम श्री हरविजय जी से संवाद कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ श्री हरविजय जी ने दी. आपकी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. It's a pleasure and an honor at the same time. Thank you very much. हम चर्चा कर रहे हैं श्री हरविजय जी से, जाइएगा नहीं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे. धन्यवाद. हम ब्रेक के बाद फिर से चर्चा जारी रखेंगे श्री हरविजय जी के साथ. बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, कल्चर के ऊपर भी चल रही है और उनके एक्सपीरियंस भी चल रही है.